You are now unmuted. Good afternoon, everybody. How are you all? Good afternoon, ma'am. कैसे हो दीपक आप? दीपक, हर्षिता, निकिता. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Nikki. How are you? How's everything? Fine, ma'am. कैसे? Good afternoon, Preetam. आप कैसे हो? I'm fine. Or missed me? Huh? How was your botany class? Little bit. Yes, ma'am. Fine, ma'am. Fine, ma'am. Okay, you like it? Yes, ma'am. Harshita, you missed me? Yes, ma'am. Huh? Seriously? Really, ma'am. Oh, so sweet. चलो, okay, tell me who gave me the summary of the previous lecture. हमने कहाँ तक पढ़ा था? I think we have done with derived lipids, right? Conjugated lipids तक हमने सब पढ़ लिया था ना? Right, Harshita? Harshita, Nikita, Preetam, Shanu, Deepak. Good afternoon, Shanu. How are you? Good afternoon, ma'am. Or Good, ma'am. good? Any problem? Okay, tell me, हम लोगों ने last class में derived lipids तक पढ़ लिया था, right? Yes, ma'am. Okay. So derived lipids basically क्या होता है? Who's gonna tell me? Harshita? Harshita? Nikita? Nikita, what is conjugated or compound lipids? Tell me. What, ma'am? What are derived lipids? जल्दी बताओ, आधे चैप्टर खत्म करेंगे फटाफट. Harshita, do you know the answer, बच्चे? Shanu, Deepak, Preetam. मैम कंपाउंड लिपिड तक हुआ था. कंपाउंड लिपिड तक हुआ था, derived lipids की बात नहीं हुई थी. No, ma'am. Okay, so basically what is, you all can able to see the screen, right? Yes, ma'am. Okay, so basically compound lipids हमने क्या पढ़ा था? That is two molecules. One second. Lag. I want little thick, not more than that. Then okay, yes. So basically हमने compound lipids में क्या पढ़ा था? That is two molecules of fatty acids plus glycerol plus H3PO4, right, plus nitrogenous compound. Just we have read about compound lipid, and what are derived lipids? That is derived from the conjugated lipids से. Derived lipids किससे बनते हैं? That is आपके conjugated या compound fat या compound lipid से बनते हैं. समझ आ गया? They are complex structure. They are complex structure, okay, and they are insoluble in water. Right, derived everybody? lipids में two molecules of fatty acid ये सब रहता है derived में. No, that is in a compound बच्चा. Compound lipids की बात कर रही हूँ मैं इसमें. ठीक है? I'm talking about the compound lipids. समझ आया यहाँ तक सबको? Derived
Yes. And they are soluble in organic solutions, but they are soluble in organic solution. Now tell me, what is organic solution? That is acetone, right? सबको समझ आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am. Now we'll talk about proteins, right? We'll talk about which? We talk about proteins. Okay, tell me, what are protein? Yes, Arshita? They are made up of amino acids. Yes, they are made up of amino acids. But अगर हम basic से start करते हैं तो they are the building blocks of the body, Yes, ma'am. right? And they are essential for the energy, right? Ener- And they are basically made up of amino acids, right? yes, Now ma'am. some proteins have phosphorus, sulfur, iodine, and iron also, right? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है. And what the initial? They are made up of CH1. They are the basic structure for a protein. Each and everybody agree with it? And proteins are most abundant in protoplasm. Everybody got it? Yes. यहाँ तक Yes, सबको ma'am. क्लियर है? Now the basic structure of an amino acid is that this is the basic structure of an amino acid. Am I right? यहाँ तक सबको समझ आया? This is an Yes, carboxylic. ma'am. This is an carboxylic group. This is an Amino. amino group, right? Each and everybody, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ? मैम ऊपर में एक तो पॉइंट लिखा है they are made up of They are made मैम up ये of वाला. Yes, basically ma'am. 4 elements, that is CHON, carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Then what we have, protein is the heteropolymer of amino acid. Heteropolymer का मतलब क्या है? They have contained an amino group and a carboxylic group as well. यहाँ तक सबको क्लियर आया? Now this amino group and carboxylic group basically and carboxylic group is present on the same carbon, that is alpha carbon,
हाँ जी, दीपक, हर्षिता, हेमंजनी, निकिता, प्रीतम, रिंकी, शानू, कोई भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? मैम एक बार बता दीजिए, मेरा अभी लॉगिन हुआ है। बच्चा, मैंने अभी तक क्या डिस्कस करा है? आई हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ स्मॉल टॉपिक व्हिच हैव बीन लेफ्ट विद, दैट इज अ डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स से हमें स्टार्ट करना था। डिराइव्ड लिपिड्स कौन से लिपिड्स होते हैं? दे आर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, एंड बेसिकली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? They are derived from conjugated or complex lipids. Okay, and they are soluble in organic solution like acetone. Okay, then what we have discussed about proteins. प्रोटीन्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर हम बेसिक्स से स्टार्ट करें तो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, दे आर एसेंशियल फॉर द एनर्जी एंड दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। नाउ सम प्रोटीन्स हैव फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, आयरन आल्सो। दे आर मेड अप ऑफ बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट एवरीबॉडी? Then proteins are most abundant in protoplasm. Proteins जो होते हैं वो बहुत ज्यादा abundant, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं किसमें? प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। Then the basic structure of an amino acid that they have a carboxylic group and amino group, right? And they are the basically proteins are the heteropolymer of amino acids, ठीक है। That is amino acid and carboxylic group is present on a same carbon. That same carbon is known as an alpha carbon. That is why it is called an alpha amino acid. यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछना। यस, दीपक, निकिता, नो डाउट मैम। दीपिका, निकिता, एनी डाउट? शानू, एनी डाउट यहाँ तक? रिंकी, क्लियर हो गया बच्चे? No, ma'am. ओके, रिंकी क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, यस मैम। okay. Now amino acids are being substituted by R group. By R group, ठीक है। Now it are being substituted by R group मतलब कि अगर मैंने basic structure बनाया है, that is C double bond O and OH, then R, then we have NH2 and we have H. अगर मैंने इसकी जगह यहाँ H लग गया, what is this structure called as glycine, right everybody? यहाँ तक क्लियर? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर समझ आया? Yes, ma'am. नाउ अगर इसी के बाद मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड OH देन NH2, अगर मैंने इस R की जगह मैंने CH3 लगा दिया तो व्हाट द स्ट्रक्चर नोन एज, किसी को पता है? यस हर्षिता? मैम एलेनिन। दैट इज एलानिन, ओके। एंड देन सेम मैंने क्या किया, अगर मैंने this structure I have this structure is known as what? Serine. यहाँ तक सबको क्लियर है? Now amino acids are amphoteric. What is amphoteric? Yes everybody, what is amphoteric? Compound. Ma'am, acid or base? Both acid and Exactly. Both acid and base is present. How? That they form a what?
that is R group, this is H group, this is NH2. अगर मैंने इसको देखा तो what I can get it? I can get COO negative, then right everybody, and then CH3 positive also, and then this R and this H. This state is known as which state? That is zwitterion. Am I right everybody? मैम तो नीचे एक तो एक्स्ट्रा एच मैम लग गया। मैम ये नहीं लगेगा COOH वाले कार्बन पे ये H थोड़ी ना लगेगा नीचे वाला। H2 हो जा कौन रहा सा है, कौन सा कौन 5 सा? बॉन्ड हो जा रहा है। मैम मैम अल्फा COOH वाले कार्बन के कार्बन पे साइड जो में। H लगा हुआ है। ये ओ सॉरी हाँ, दिस कैन नॉट बी इम्पॉसिबल बिकॉज ये तो दो डबल बॉन्ड होगा। वन सेकंड, यस अब Yes, समझ मैम, आया? वैलेंसी बढ़ा देगा। अब समझ आ गया? दैट इज क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? This zwitterion is known as, that is, it has both the carboxylic group as well as amino group. Carboxylic group is acidic in nature and amino group is alkaline in nature. यहाँ तक सबको क्लियर है ये चीज? Yes मैम everybody? रिएक्टेंट में मैम एक्स्ट्रा एच हो गया मैम, कार्बन का 5 बॉन्ड हो जा रहा है मैम इस तरफ। मैम सेकंड नंबर कार्बन है मैम COOH अल्फा वाला जो कार्बन में कार्बन ठीक है। था। एक सेकंड मैम बचे, एक सेकंड। मैम जिस कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्डेड है उस वाले कार्बन की बात कर रहा है ये। हाँ मैम ये वाला। अब समझ आ गया? अब क्लियर हो Yes, गया? ma'am. बैलेंसी कंप्लीट हो गई सबकी? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, दैट्स इट। zwitterion समझ आया क्या होता है? हाँ जी, zwitterion सबको समझ आया? यहाँ पे तो लगेगा। yes, Yes, ma'am. ओके, यस नाउ मैम। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? ओके, टेल मी व्हिच इज, ये हमने कल किया था, ये क्वेश्चंस हमने कल प्रैक्टिस किए थे सारे के सारे। Yes, ma'am. सारे शायद नहीं किए थे मैं, मेटाबॉलिज्म वाला किए थे, कौन सा वाला रह गया था इसमें बेटा? ये भी किए थे। मैम सारे करे थे। सारे किए थे हमने बच्चे, ये तो मुझे भी याद है। यस मैम। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है वो सबको? जो रिएक्शन का लिखा हुआ था वो वाला भी। हमने सारे किए थे एकदम, सबके सब किए थे ओके हमने। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछो मुझसे अब। ठीक है, zwitterion समझ आ गया? zwitterion समझ आया सबको क्या होते हैं? नाउ टेल मी हाउ मेनी क्लासिफिकेशन बता दो अमीनो एसिड्स की, कि व्हाट आर एसेंशियल एंड व्हाट आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताएगा मेरे को? यस Ma'am, essential amino acids are valine, हाँ lysine, हाँ, लाइसिन, isoleucine आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड ये सारे तो मुझे बता दी, और ये तो मुझे पता है। मुझे तुम ये बताओ कि एसेंशियल अमीनो एसिड का डेफिनेशन क्या है, पहले तुम ये बताओ। ma'am which Ma'am, they are are incapable of in of body say Basically, that amino acid which cannot be synthesized by our own body, but they are essential for the body, right? So that is are known as essential amino acid. Essential amino acids are those amino acids no जो बॉडी के लिए Which- एसेंशियल है पर वो बॉडी से सिंथेसाइज नहीं होते हैं। yes, which cannot be synthesized by the body, but they are important, right everybody? अब इसका आंसर क्या है? थ्रियोनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, then we have tryptophan, then we have arginine, मिथियोनिन।
Then methionine, tryptophan, phenylalanine. valine, leucine, isoleucine, histidine, ठीक है, then lysine, arginine. valine and histidine. इसके अलावा कोई भी अमीनो एसिड्स बचे? सारे हो गए? या दैट इज phenylalanine. One second, that is phenylalanine. ठीक है, phenylalanine, these are what? These are all comes under essential amino acid. समझ आ गया ये चीज? Now जो arginine है और जो histidine है, ठीक है, they are semi essential. Okay, समझ आया? They are come under which? They are come under semi. They are come under semi essential amino acids. क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? Any doubt? Now we have left with non-essential amino acids. Yes, Harshita, tell me what is non-essential amino acids? Ma'am, they can be synthesized by body. Yeah, basically what are they? They can synthesized by the body, right? That is, they can be synthesized, but they are not that much important. Example क्या है? Aniline, then cysteine, and we have glutamine. We have aspartic acetic acid. We have glutamic acid. What else we left with? Triosine. Anything else? Serine. Ma'am, these are important for body or not? But they are not that much important, but yes, somehow they are important. They are playing in an important role for the body, but they are non-essential. They are not that much important, but they are synthesized in our body. ये हमारी बॉडी में बनते हैं. समझ आ गई ये चीज सबको? कोई दिक्कत है? And we have proline as well. Now always remember guys कि proline के अलावा except glycine, ठीक है, मतलब except glycine all over have an atomic isomers. सबके इंडियन atomic isomers होते हैं. समझ आ गया ये चीज? कोई भी डाउट है इसमें? कोई भी डाउट है? पूछ लो. हेमन, can you please unmute yourself, बच्चे? Heman, can you please unmute yourself? Manjini, ma'am. You're Manjini. Himanjini. Himanjini, hi. Where are you from, bachcha? Hyderabad, ma'am. Hi, how are you? This is the first class with me? Fine. Yes, ma'am. Okay. आपको समझ आ रहा है सब कुछ? कोई भी डाउट है? Yes, ma'am. No, ma'am. Till now, no doubt. Okay. Then we'll start about this amino acids are always found in air amino acids. ठीक है? Mostly, but we have D amino acids as well. Thus we have D amino acid that are occurring in peptidoglycan. What are peptidoglycan? D amino acid किसमें होता है? We have peptidoglycan में होता है. किसमें होता है? Peptidoglycan. Peptidoglycan कहाँ पढ़ा था आपने? Ma'am, acidopolysaccharide.
पेप्टिडोग्लाइकन हमने बैक्टीरियल वॉल की फॉर्मेशन में भी पढ़ा था, सेल वॉल की फॉर्मेशन में, कि दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, राइट एवरीबॉडी? यहाँ तक कोई डाउट? Yes, ma'am. यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लो। यस, एनी डाउट? यहाँ तक सबको समझ आया? Yes, ma'am. अब इसमें आपको और क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज हमने इसमें पेप्टाइड बॉन्ड दिखाना है, ठीक है? तो हम इसमें कैसे दिखाएंगे, दैट इज C R then H then NH2 then we have the COOH। वैलेंसी पूरी है प्रीतम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से प्लस दोबारा तो OH होगा, तो OH होगा, ठीक है। Then we have N, one second, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अब मैं इसमें से क्या हटाऊंगी? I'll release water from it. Agree with me? Yes, everybody. Then we'll got what? We'll got NH2 CRH, then C double bond O, then we got N के साथ H, then we got CHR, then COOH. This bond is known as peptide bond. Is this clear? यहाँ तक क्लियर है? हर्षी, कोई भी डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. No, No, ma'am. everything is clear. Now Yes, ma'am. classification of amino acids मुझे बता दो, किसी को अगर आती है तो। Basic and Yes. Yes, Preetam. मैम ये नहीं होता, तीन ऐसे नहीं होते क्या, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल या नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड? हाँ हाँ, एक और होती है। हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ। Amino acid is basically acidic, then alkaline, Basic. and we have neutral, right? Acidic amino acid में कौन से आते हैं? Glutamic acid, Aspartic acid. aspartic acid. Now, what are this acidic amino acid? This acidic amino acid, that means they have two carboxylic group and one amino group. Right everybody? That is, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। Right everybody? यहाँ तक क्लियर है हुआ सबको? And if I can be that is 3 positive and 0 negative and C double bond O negative, इसका नेट चार्ज कोई बता सकता है क्या होगा? इसका नेट चार्ज क्या होगा अर्षिता? Yes, Evanjini. What is it net charge बच्चे? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? यस शानू, दीपक,
Positive, ma'am. Can you please repeat it, Harshita? Positive, ma'am. Why not negative? If I neutralize this charge, then also I'll left with negative charge. And what about this one? If I'll say that alkaline, that means 2 amino group plus 1 carboxylic group. Example, histidine. That is histidine. And what will left with? Lysine, arginine, right? तो अगर मुझे इसका बनाना पड़े तो will have NH2COOH and one second, yeah, NH2 will left with NH2 and then COOH, right? हिमचनी समझ आ रहा है बच्चा आपको इधर? तो अगर मैं इसका नेट चार्ज निकालती हूँ तो I'll be left with NH3 and COO नेगेटिव. तो इसका तो अगर मैंने चार्ज निकाला तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? यस एवरीबॉडी. हर्षी, पॉइंट समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Positive. Exactly. So that means alkaline group is always come under positive and acidic comes under negative. And the rest of the 15 amino acids comes under neutral amino acids. Get it? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बता सकता है. Yes, Himanjani, is everything you got it, बच्चे? कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ. Understood, ma'am. हाँ? Sorry? Understood, ma'am. Understood? Okay. You know Hindi as well? Yes, ma'am. Okay. So basically you're from Hyderabad only? Like I've been in Chandigarh as well as in Assam. Then I'm in Hyderabad, ma'am. No, you're in Hyderabad. Okay. Cool. Then we'll move forward. यहाँ तक कोई भी सब कुछ क्लियर है? प्रीतम क्लियर? Now मेरे को एक बात बताओ, प्रोटीन का स्ट्रक्चर. मुझे कौन प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताएगा? Primary, secondary, and tertiary. I know you are the only one who gave me this answer, Rashida. I know. That is, we have the primary structure. Okay. Primary structure is a straight line structure. Agree? Which is linked by? Yes, ma'am. Which is linked by peptide bond. Agree? The structure Yes, ma'am. is not stable. Okay, that is newly protein synthesis. Newly protein synthesized on ribosomes are primary protein. प्राइमरी प्रोटीन्स क्लियर है? प्राइमरी प्रोटीन्स क्लियर है?
हम थोड़ा नीचे कर देंगे उसको लिखने वाला डेफिनेशन को। कौन सा स्क्रीन? ना मुझे ऊपर लिखना है तो लिखो, अच्छे से लिखो। लिख लो तो प्लीज मुझे बता देना। लिख लिया? हम लास्ट लाइन एक बार बोल देंगे। This structure is not stable. Newly proteins are synthesized on ribosomes. ओके मैम, ओके मैम। हो गया? Then we're left with secondary protein. Secondary protein. Now, what is secondary structure protein? These are spirally coiled structure. Are you getting it? That means they look like this. यहाँ तक समझ आया? They are spirally coiled. Understood? Yes, ma'am. The structures look like this. Primary जो structure है वो कैसा दिख रहा था हमें? They look like a straight line. ठीक है? They are simple structures. They are the simple chain of amino acid, but they are unstable because they are newly formed and they are formed by the ribosomes. यहाँ तक सबको clear है? In addition, they are linked by peptide bond. Agree everybody? Yes, ma'am. And then amino acid are linked by hydrogen bond between oxygen and one of amino group as well, right? समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? Then इसके बाद they are divided into alpha helix and beta helix. What is alpha helix and beta helix? Anybody? Ma'am, right word अल्फा cold. हेलिक्स Basically right angled, basically Coil होता है. जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा that हेलिक्स is कॉइल्ड होता है divided ना. into that is alpha helix and beta helix. जो alpha helix होता है that is right handed. That is which color should I use it? Tell me. Yes. Which color you want me to choose? Harshita. Blue? Blue? Okay, ma'am. What's your color? Okay, ma'am. Violet. You like pink? Violet. Okay, I should go with pink then. Okay, alpha helix Yes. basically
handed, spirally coiled structure. दिख रहा है यहाँ तक सबको? They have 3 1/2 amino acid in each turn. Tell me the example of the alpha helix structure. Can anybody? That is Ma'am, glycine. keratin. That is keratin, myosin. Right. And we have also tryosin. Keratin and myosin. Exactly. यहाँ तक सबको क्लियर है? अल्फा हेलिक्स क्या होता है? Basically it's a right-handed spirally coiled structure. That is, they have 1/2 amino acid in each turn. The example is keratin and myosin. Agree? आगे चले? Now what is beta helix? They are. Now which color should I use? Himanjani बताएगी. She's a new student today. Yes, you tell me. Ma'am, I choose lavender, but that is not visible, so dark blue. अब बाबा ऐसा कलर बताओ ना जो लैवेंडर इसमें कहाँ होगा? So you'll choose blue. The last one. This one. Yeah, that is a kind of lavender shade, but dark blue is better. Okay, I'll choose the dark blue. Okay. Now, basically beta helix जो है that is zigzag structure. Agree? Intramolecular hydrogen bonding can be seen. Intra. That is intra. Mom, Baba, intermolecular hydrogen. दोनों के बीच में, दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में, that is intermolecular hydrogen bonding. That means they have intermolecular hydrogen bonding can be seen. Agree? They have the fibrous structure in appearance. In appearance. क्लियर है यहाँ तक सबको? एग्जाम्पल क्या है बीटा हेलिक्स का? एनीबॉडी नो? Fibronil that look like silk. That is secondary structures में they look like a fibrous appearance. Fibrous appearance. अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स क्लियर है? कोई डाउट है इसमें तो प्लीज मुझसे पूछ लो. Yes, Deepak, Harshita, Nikita, Preetam, Rinki, Shanu, Harshita. What? Bacha, your voice is not clear right now. Mom, what is collagen helix? Ma'am, beta helix के example. That is fibronil. Ribonucleus. Fibronil and what? Nikita, what? Ribonucleus. हाँ, ribonucleus. Ribonucleus. हाँ, and Beta carotene. beta carotene. Beta carotene. Sorry. Yes, exactly. Now we have left with Harshita. What was the question, bacha?
Harshita? Harshita? मैम Hmm. मैम 3.5 अल्फा मैम अल्फा हेलिक्स में जो 3.5 अमीनो एसिड इसका मतलब मैम किसका मतलब मतलब कि मैम जो एक अल्फा टर्न पे, मतलब कि फॉर एग्जांपल दिस इज एन हेलिक्स, ठीक है, एक टर्न पे मेरे पास कितने अमीनो एसिड है? 3/1/2 अमीनो एसिड। समझ आया? मतलब इस हिस्से में मेरे पास 3/1/2 अमीनो एसिड है एक टर्न पे, ठीक है। जो आपको मैंने सेकेंडरी का स्ट्रक्चर बताया था, दे आर स्पाइरली कॉइल्ड, ठीक है, दे आर स्पाइरली कॉइल्ड। सो हर एक टर्न पे वी हैव हाउ मेनी अमीनो एसिड? 3/1/2 अमीनो एसिड। हर्षिता, व्हाट वाज द क्वेश्चन बच्चे? What is collagen helix? बच्चा, कोलेजन हेलिक्स इज आल्सो दिस कम अंडर दे हैव द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कोलेजन का। ओके हर्षिता, they are also look like a fibrous one. Thin fibrous collagen fibers कहाँ मिलते हैं? collagen fibers कौन बनाता है हर्षिता? Yes हर्षिता? हर्षिता? Mom, Yes. फाइब्रोब्लास्ट बनाते mom, थे, fibroblasts. फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बनाते थे कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स में भी वी हैव 3 टाइप ऑफ कोलेजन, दैट इज कोलेजन 1, कोलेजन 2, कोलेजन 3। Type 1, type 2, type 3 collagen fibers are there in our body. 3 types of collagen fibers are there, which are synthesized by the fibroblast. Agree, Harshita? Yes, mom. What happened? Not getting it? Mom, nothing, mom. What happened? Say. Shall we discuss in a doubt class then? Mom, collagen helix, mom. Collagen Okay, helix mom. is also that is I'll discuss in a doubt class. Okay. But they have also specialized structure. Okay, mom. ठीक है, they are also they look like they are also spirally coiled. Okay, it look like this collagen helix. Okay, get it, Harshita? Yes, mom. Okay. And please कोई भी तुम्हारे related subject doubt होते हैं, you should ask it in your doubt class, because तुम लोग doubts नहीं लाते हो doubt class में. I'll have to make doubts for you. Now tell me what are tertiary structures? Yes. Tell me something about the tertiary structure. Harshita? Mom, they enforce itself H2 like bond. a wooden ball. एक एक करके बताओ. They are most stable. They are They are most most stable stable. structure. Basically, they are most stable होते हैं. High energy retardation radiation होता है इनमें. High energy. H2 bonds होते हैं. ठीक है. How they look? They are looking like a folded structure. Mom, it is necessary for biological activities of food.
Yes, example. Folded structure gives you the appearance of globular structure. Agree? They are soluble in water. Okay, one more thing, Baldev. That secondary Disulfide structure. bonds. Yeah, they are connected by disulfide bonds also, and the secondary protein are insoluble in water. Okay. And then they are soluble in water, and the structure of protein has multiple bonds. इनमें कौन-कौन से bonds देखने को मिलते हैं? That are second. Yes. They are connected by a multiple bonds that are disulfide bond, peptide bond, hydrogen bond, ionic bond, and we have the So basically they are connected by disulfide bond, peptide bond, hydrogen bond, and the ionic bond. Clear? यहाँ तक clear है सबको? Tertiary structure? No, they look like see, it's look like a globular structure. ये structure समझ आया tertiary का कि they are spirally coiled and they are giving me folded structure होता है and they are giving the appearance of a globular structure. Right, everybody? Get it? Okay. Then basically two or more peptide chain से बनता है ये. Okay, tell me the example for the tertiary structure. Anybody? Tertiary, ma'am. Myoglobin, ma'am. Yes, we have the myoglobin and सारे enzymes रहते हैं सारे enzymes प्रीतम you're not clear बच्चे. हम सारे enzymes भी रहते हैं ना उसमें Okay, two or more peptide chains of tertiary structure with different bonds is come under quaternary structure. यहाँ तक क्लियर है सबको? Different, basically different peptide chain
may be similar. Example, hemoglobin. Right? Insulin. They have the quaternary structure. क्लियर है यहाँ तक सबको? इसके फीचर्स क्या है? मोस्ट स्टेबल होता है, हाई एनर्जी, they look like appearance of quaternary structure like tomorrow in the next lecture I'll show you the videos how the amino acids are really attached. I'll give you that bonding कि कैसे bonds बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, अमीनो बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक बॉन्ड, मैं कल इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी. ठीक है, समझ आ गया सबको? हर्षिता, दीपक, प्रीतम, रिंकी, शालू, यस, सबको क्लियर है ये चीज? कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लो बच्चे. शालू, रिंकी, प्रीतम, मैम क्लियर है. हेमंतरी, is everything clear till now? यस मैम. Yes, प्रीतम. एनर्जी हाई रहेगा तो लेस स्टेबल रहेगा ना. स्टेबिलिटी मतलब हाई एनर्जी मतलब कि इसमें व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इट्स अ रेडिएशन ज्यादा नहीं होगा, रिटार्ड ज्यादा नहीं करेगा. ठीक है, ओके. ओके. इसमें तुम केमिस्ट्री मत घुसाओ. ठीक है, ओके, समझ आ गया? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़े? यस मैम. बिकॉज स्टेबिलिटी, वन सेकेंड, टर्शियरी स्ट्रक्चर भी हाई एनर्जी रेडियंस करता है और वो स्टेबल होता है. इट इज ऑल्सो हाईली स्टेबल. टर्शियरी एंड क्वाटरनरी हाईली स्टेबल होते हैं स्ट्रक्चर. ओके, समझ आया? Nikita, tell me something about the denaturation of protein. मैम बेसिकली अगर टेम्परेचर हाई होगा एंड मैम हाई पीएच होगा तो व्हाट विल हैपन? मैम एक सेकेंड, कैन यू प्लीज रिपीट? 3 मिनट का थोड़ा सा रिपीट कर दो. क्या पढ़ा है? लॉग आउट हो गया, हो ही नहीं रहा था लॉग इन. अच्छा, ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई हैव. मैंने सिर्फ तुमको इतना पढ़ाया था कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बता रही थी, फीचर्स बता रही थी मैं. दैट इज इट इज मेड अप ऑफ 2 or more पेप्टाइड चेन्स ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर. ठीक है, देन दे आर बेसिकली फॉर्म बाय द डिफरेंट बॉन्ड्स. वो डिफरेंट बॉन्ड से बनते हैं एंड देयर पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं दे मे बी सिमिलर. एग्जांपल क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, इंसुलिन होता है. दे आर मोर स्टेबल. ठीक है, ये मोस्टली स्टेबल होते हैं एंड दे हैव द ग्लोबुलर प्लस स्ट्रक्चर लाइक this. ठीक है, that I have told you in quaternary structure. Get it? समझ आ गया? Okay. Yes. Denaturation of proteins बता दो बच्चे. Yes. Ma'am, so basically the proteins or nucleic acid, they lose the tertiary, secondary and quaternary structures.
in the presence of acids or bases and high Basically, if temperature. there is change in pH, salt, heavy metals, temperature, Yes. pressure, right? So they can basically denatured. They cannot be functioning. मतलब उनका जो functioning होगी वो नहीं कर पाएगा, right? Right? The secondary और tertiary Yes. structures जो होते हैं, they may be destroyed. ठीक है? समझ आ गई ये चीज सबको? क्लियर हो गई? जहां तक क्लियर हो गई सब कुछ? Denature of protein. Tell me something about the enzymes. Natural catalyst, ma'am. Yes, they are natural catalyst. What else you Biochemical know? catalyst. Sorry, I didn't hear They you. lower the activation energy. अच्छा, और Ma'am, speed up the reaction metabolic pathway. हाँ, obviously अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो जो मेटाबॉलिक पाथवे होगा वो स्लो हो जाएगा. और React as biocatalyst. Sorry. शायद पता नहीं. बायोकैटलिस्ट भी होते हैं ये. Biocatalyst. ओके, काफी कुछ जानते हो तुम लोग एंजाइम्स के बारे में. एंजाइम से पहले मुझे बताओ टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ basically types of proteins. Yes, tell me about the types of proteins. We have simple, compound, Complex compound. Sorry. and we have derived. ठीक है. Simple में fibrous and globular. Clear? Then we have long coiled. Example क्या है? Collagen, right? Elastin and keratin. यहाँ तक सबको क्लियर है? ग्लोबुलिन का रूबिस्को, then albumin, then globulin and histone. What are histone proteins? Histone proteins हमने 12th में पढ़ा था. H1 protein. मैम वो DNA पे H1 protein. Exactly. जो Positive. DNA है that is a negatively charged. Ma'am, ठीक है. And positively histones charged. are the positive charged. So they're basically Yes, ma'am. enwrapping the DNA. Exactly. yes ma'am. Okay. Now tell me something about the compound. What are compound protein? मैम ग्लोबुलर में क्या क्या लिखा है एक बार दोबारा बोल देंगे. Rubisco, that is मैम हो गया मैम. Rubisco, albumin, globulin and histone. समझ आया? Now Yes, tell ma'am. me about compound proteins के बारे में आप लोग क्या जानते हो? Yes. Tell me about the compound protein. That they are made up of protein part, non-protein part, right? Agree? They are made up of amino acid and they are made up of prosthetic group. Clear? समझ आया?
acid group. ठीक है? Get it? Harshita? Harshita, Himanjani, all clear with it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What happened, Himanjani? Boring लग रहा है? Nothing. No, ma'am. No? If it is boring, I can make you more interesting also, if you feel so. Hmm? Oh, it's interesting. Okay. Why you want to be a doctor? Hmm? I like plastic surgery, so You like plastic I wanna be surgery? yeah. I love dealing with micro things, so I wanna be a plastic surgeon. You want to be a prosthetic surgeon? So once you can opt for that career, you can do BDS and then MDS in prosthetic, and you can be a prosthetic surgeon if you want to be. That is also a good. Plastic surgeon. Yeah, that prosthodontics also, like this is a branch in MDS. Okay, if you opt like BDS, there is a branch because I am also move. I also move in that branch, prosthetics branch. So there we can make eyes, ears, and fingers, ears of acid attack patient. Hmm. Then fingers, we can make legs also with that prosthetics. Okay. So yeah, it's a Didn't good know that. career option. Yeah, if you want to be a there are two type of surgeries. There are plastic surgeon, that the Yeah, cosmetic surgeons, cosmetic and right? And then we have the prosthetic surgeons, which can help to replace the organs. For example, aesthetically. For example, I don't have a finger. Okay, so there some prosthetics have been used, acrylic, most of the materials are being discovered till now, and we can make there a finger-like structure, and this look exactly similar to the finger. I'll show you some videos of this prosthetic branch, Himanjani. If you are very interested in do, you can do it. And I want to yes, do for ma'am. a I would social love to. service. Yeah. I would love to. Yeah, I'll show you because my subject also in prosthetics now, and I am also looking forward into these prosthetics. So yeah, I'll show you some videos of it. You must be liking it. If some yeah, so if you got this cleared and if you love BDS also, you can be a prosthetic surgeon. Because cosmetic surgeons, where you are only bound. Cosmetic surgeries is also can be done by the MDS doctor, by the oral surgeons. You heard about that oromaxillary surgeons, right? I've just heard about them, but I don't know in detail about that. Yeah, the detail is that they can also do surgeries of the nose, ears, that that palate, cleft palate, right? And if there are any deformities also, developmental deformities, so yeah, they can opt that. If you want to be, if you want to go in this field, you can opt this also. Okay. Yes, ma'am. Yes. And remind me tomorrow. I'll show you one of his video of this prosthetics group. You really gonna like it. Though Yes. in this career, if I'll choose you, if I'll say something, then yeah, it's expensive because that one year cost almost about a lakh. So yeah, this this is thoda costly, but yeah, after being while when government provides these facilities, obviously it goes because this we have to help for the society, for the people who cannot afford it, right? So Yes, yeah, ma'am. okay. Ma'am, your next class will be on Sunday, ma'am. Huh? Yes, ma'am. Oh, now this is only my last class with you. Oh. Yes.
What, you want me to take it in between also? Yes, ma'am. मैम टेस्ट on Sunday. यस, दिस संडे, यस। क्यों टेस्ट नहीं देना है तुमको? हाँ, अच्छे से टेस्ट देना है इस बार सबके सब, मैं बता रही हूँ। ओके, maybe I didn't know that now my next lecture is on Sunday, so let's finish it off, nucleic acid and enzymes, ठीक है? Then further, yeah, Sunday I'll take a lecture of about 2.5 hours. Okay, okay Ashita, is it okay? Okay, ma'am. Yeah, nucleic acids. Okay, so yeah, you'll tell me about the nucleic acid, Harshi. Basically, acid insoluble fraction, one second, fraction of living cell is the nucleic acid, right? Now these are polynucleotide, right? These comprises macromolecule, right, of Yes, ma'am. living cell. इसके जो building blocks हैं, Nucleotide. that are nucleotides, right? And the third is basically they are second, आप इसको बोल सकते हो, they are monocyclic, the second one of the heterolytic group उसमें होता है, heterocyclic group, cyclic compound plus a monosaccharide also, and the third group is phosphoric acid or a phosphate. Agree? यहाँ तक क्लियर है? न्यूक्लिक एसिड्स में आपको इतना ही जानने की जरूरत है कि दे आर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, दे आर मैक्रोमोलेक्यूल, दे आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये लोग न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। Then building blocks of nucleotide, that means they are made up of a heterocyclic compound, then a second way they have the monosaccharide, and the third one is the phosphoric acid or the phosphate group. Get it? यहाँ तक सबको क्लियर है? हर्षिता, निक्की, शानू, हिमंजनी, हर्षिता, दीपक, all clear? Clear, ma'am. Okay, now Yes, we'll ma'am. talk about the enzyme. मुझे किसी ने बोला that enzymes are the proteinous structure. They are act like a biocatalyst also. They increase the basically rate of reaction को ये increase करता है, right? Will increase the metabolic rate also. Have active site. Sorry. They have active sites. Yes, they have the active site. They are working as lock-in key method, right? So ये मैं सब लिख रही हूँ, इसके बाद तो मुझे बताना. They are the basically they are the almost all enzymes are proteinaceous. One second. All enzymes are proteins. There are some nucleic acid.
nucleic acid that behave like enzymes. They are called, what they are called? Ribozymes. Ribozymes समझ आया? And can depict and can depict on enzyme by a line diagram. An enzyme is like a protein. ठीक है? They have the primary amino acid structure. Get it? That is amino acid sequence of protein. Get it? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? Then they have the Yes. yes. Now they have the active site. ठीक है? How is gonna work? It gonna work like E plus S, right? They have the enzyme plus substrate. Enzyme, then substrate. Then they form the ES complex. Then they form E plus product. Mechanism समझ आया? कोई भी इसमें डाउट लगा? They have the active site where the substrate has to bind. They are working on a lock-in key mechanism. हर एक सबस्ट्रेट का हर एक एंजाइम होता है. जैसे ये हर एक लॉक की हर एक की होती है. अब ऐसा तो नहीं होगा ना, आप बेडरूम की की से आप ड्राइंग रूम के डोर नहीं खोल सकता, राइट? क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मुझसे पूछ लो. हाँ ना तो बोलो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, बोर हो रहे हो, कुछ हो रहा है? No, ma'am. Okay, please be active and concentrate on this. हर एक एंजाइम का हर एक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है? So they are managed on a lock-in key mechanism. When the substrate bind with an enzyme, they'll make an ES substrate complex basically, and then the product has been formed and enzyme is again free to bind with an again substrate. Get it? यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ? Yes, यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है? Now, I'll talk about the chemical reaction. ठीक है? पहली बात तो एंजाइम से पहले हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं. What are these chemical reactions? Basically, physical change and chemical change हमने पढ़ा था हमने बचपन से पढ़ते आ रहे थे हम. फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, दैट मीन चेंज इन. इसमें क्या हो रहा है? चेंज इन शेप. सिर्फ यहाँ पे चेंज इन शेप, चेंज इन साइज हो रहा है विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड.
but here the chemical bonds क्या बन रहे, टूट रहे हैं, ठीक है. बेसिकली देयर इज breaking of bonds and making a new substance. ठीक है. And also the rate, what is that rate? Rate can be determined as your time. जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा कितने कम टाइम में, उतना रेट ऑफ एक्शन ज्यादा रहेगा. राइट? समझ आया? Yes. ठीक है. नाउ इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी इनहिबिशन पे. इनहिबिटर्स क्या होते हैं? टेल मी व्हाट आर इनहिबिटर्स? व्हाट आर इनहिबिटर्स? व्हाट आर इनहिबिटर्स? मैम They रिएक्शन की inhibit स्पीड कम or कर देते हैं. yeah. बेसिकली वो जो एक्टिव साइट पे पहले बाइंड कर जाते हैं so that they can stop the formation of the product. जैसे कि मैं बताती हूँ. Or they change the shape of the enzyme. या एग्जैक्टली. बेसिकली ये एक लॉक है. इसकी की जो है, सॉरी यार, की अब मुझसे की कैसे बना देती हूँ. हंसना मत, मैं पहले ही बता रही हूँ. ड्राइंग है मेरी थोड़ी इस पे पेन टैब पे. ठीक है. क्या हुआ, ये मेरा लॉक है, ये मेरी की है. मैं मार्केट गई, मार्केट में मैंने की घुमा दी, नहीं मिल रही. ठीक है. मेरे पास, मैं फिर घर आई, मैंने एक की चेंजर को बुलाया, उससे मैंने एक नई की बनवाई. ठीक है. और ये जाके इधर मैंने लगाई तो लॉक क्या हुआ, खुल गया. ठीक है. तो एग्जैक्टली जो आपका इनहिबिटर है वो भी इनएक्ट करता है, वो आपके एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर जाता है इनहिबिटर. एंड इनहिबिटर क्या काम करता है? इनहिबिटर बंद कर देता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को. यहां तक समझ आया सबको? हाँ ना बोलना होता है. निकिता, प्रीतम, Yes, ma'am. रिंकी, एग्जाम्पल समझ आया कि एग्जैक्टली जो ओरिजिनल की है दैट एक्ट एज योर व्हाट, दैट एक्ट एज योर सबस्ट्रेट, बट ड्यू टू कि मैं उसे भूल गई, ठीक है, तो आई विल गो विद एन इनहिबिटर कि ये जाके इस पे पहले बाइंड कर जाएगा. नाउ टेल मी व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? Yes, everybody. What is competitive inhibitor? Basically, there will be a competition between substrate and this inhibitor. Who is gonna bind it first with an enzyme? Right, everybody? Yes, ma'am. ठीक है. Now, tell me something about. Tell me something about the cofactor. What are these cofactors? तुमको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर समझ आए? यस मंजरी, निकिता. Yes, ma'am. शानू, समझ आ रहा है बच्चे? शानू, बच्चा समझ आया? Yes, ma'am. हाँ, कोई भी डाउट है अभी तक भी तो प्लीज मुझसे पूछ लो. यस, कोई भी डाउट है अभी तक? शानू, किसी को भी तो प्लीज मुझसे पूछ लो. No, ma'am. ओके.
Okay, so let me tell you something about okay. Basically जो catalytic cycle होती है that is described by the following step. जो first step होता है उसका, what is this first step test? Substrate bind to an active site. Clear? And the enzyme is fitted into that. जो मैंने तुमको अभी बताया, to basically to form the ES complex and then product plus E. इतनी देर से मैं यही बोल रही हूँ. समझ आ रहा है यहाँ तक? Yes. फिर उसके बाद जो सबस्ट्रेट है वो इंड्यूस करेगा that enzyme act on it substrate to make the form the product. यहाँ तक सबको क्लियर है? अब फैक्टर्स क्या अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे that is substrate. सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन सबस्ट्रेट, टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, एंड पीएच. Now tell me how the concentration of substrate will affect the enzymatic activity. Who's gonna tell me? Harshita? Ma'am, could you repeat the question, please? Okay, Himanjani, I'm asking that how the concentration of a substrate can affect the enzymatic activity. Basically, the more the substrate, the easier would be the Basically, combination of अगर enzyme for and substrate. example अगर मेरे पास substrate ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा जल्दी एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा एंजाइम की, राइट? सो बेसिकली अगर सबस्ट्रेट ज्यादा होगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, राइट? टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होती जाएगी. क्यों? क्योंकि डीनेचर ऑफ प्रोटीन हो जाएगा, denaturation of protein हो जाएगा, राइट? एंड सेम एग्जैक्टली गोज विद द पीएच. जितना पीएच मैं कम करती रहूंगी उतना क्या होगा? denaturation. गेट इट? फैक्टर्स समझ आ गए अच्छे से सबको? शानू, प्रीतम, निकिता, यू, हर्षिता, दीपक. समझ आ गया? प्लीज मुझसे पूछ लो अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है अभी भी. Now tell me what is yeah. Now tell me what is cofactors. Now tell me what are cofactors. Yes. They make the enzymes active, Exactly. and And there are 3 types in that.
like That is prosthetic prosthetic groups, coenzymes coenzymes, and metal ions. metal ions. Nice, yeah. You studied also. You impress me. I'll give you stars. Basically, enzymes. Okay. Okay, हाँ एक और चीज जो भी मेरे इस टेस्ट में कमिंग अप टेस्ट में जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा will gonna come first. ठीक है? I'll gift him a silk or her a silk for sure. तुम्हारे घर तक आएगी, ठीक है? मगर मेरे जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए. Your score in individual subject will be good. ठीक है? Your what should I say? Yeah, out of 360, you must be having 300 to 320. कौन कौन मुझे प्रॉमिस करता है इतने मार्क्स को लेकर आएगा? 310 320 तक कौन कौन ला सकता है बायो में? हर्षिता यू? Yes, ma'am. हाँ ये तुम्हें तो लाना ही पड़ेगा फॉर श्योर. ठीक है निकिता यू ऑल्सो? यस Trying, ma'am. No, you don't have to try it. You have to do it. Okay. And Deepak, Preetam, Yes. you also. ठीक है. जितनों के भी आए 300 से ऊपर सब में बड़ी वाली सिल फेवरेट जो भी फ्लेवर हो तुम्हारा I'm gonna give it to you. Okay? Okay? Okay, ma'am. डील अच्छी है? Basically, enzymes are composed of. And Himanjani, you also give the test next week also, this coming week. I'm giving those tests this week, ma'am. I'll try. Yeah, you have to try. You can do it. Okay. Syllabus till now I have done. Okay, you don't know about the syllabus, right, Himanjani? That is, I have covered the 3 chapters for first 3 chapters of human physio. That is your digestion, absorption, your blood, and your breathing, and animal kingdom, and structure, functional unit. स्ट्रक्चर सॉरी सेल भी मैंने कवर्ड कर दिया था. एक दोबारा बॉटनी वाली मैम लेंगे वो टॉपिक आपका. एंड देन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. And the next is biomolecules. Biomolecules is not added. They'll be added in next test. Okay. Okay, so for this week, we have first 3 topics of physiology. No, for this week you have animal kingdom, and you have basically structural organization in animals. So yeah, you have to prepare for that. Yeah, अभी तक क्योंकि weekly test है तो मैंने उसके क्वेश्चन ज्यादा डाले so that you can have a good revision of this chapter. Okay? ठीक है? मैम इस वीक में Sorry? मैम इस वीक में जितना पढ़ाई हुआ उतना ही आएगा? नहीं, मैंने वीकली डाला है तो इस बार मैंने जो अपने जूओ में डाला है वो मैंने बता दिया तुमको सिलेबस. दैट इज थोड़ा एनिमल किंगडम एंड थोड़ा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. ठीक है? मैम ये दो ओके. यही दो Ma'am, चैप्टर. and structure. या यही तो चैप्टर्स हैं. ठीक है? बिकॉज आई Ma'am, and वांट structural organization is frog and earthworm included. It's या ऑल ऑफ इट इज इंक्लूडेड. मैम ह्यूमन फिजियो के चैप्टर नहीं आएंगे इस टेस्ट में? नहीं. हाँ मैंने बता दिया. हाँ ठीक है. वैसे मैं बताने नहीं वाली थी बट मैंने सोचा. एक्चुअली द थिंग इज वीकली टेस्ट में मैंने अभी इसलिए डाला है बिकॉज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ताकि तुम्हारा अच्छे से रिवाइज हो जाए. अच्छे से हम लोग क्वेश्चंस तुम लोग अटेम्प्ट करके देख लो. ठीक है. एंड फॉर द नेक्स्ट वीक यस आई विल बी इंक्लूडेड टिल बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है? ओके. ठीक है. या ओके. थोड़ा टेलीग्राम में मतलब क्या प्रीतम क्या कह रहे हो मैम? टेलीग्राम कर देना. हाँ
नो मैम पिछला टेस्ट का जो बायो का मैम क्वेश्चन है मैम वो हाँ मिलना नहीं है तो वो मैं एक्चुअली संडे मैम को वो भी मुझे ना वो डिस्कस करना है 45 क्वेश्चंस आर लेफ्ट विद इट आल्सो नो दैट इज द रीजन so yeah just completed that enzymes are composed of one or more several polypeptide chains. However, there are number of cases in which non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme to make enzyme catalytically active. Obviously, जैसे हिमंजनी ने कहा, it is divided into the three, that is prosthetic group, coenzymes, and the meta-ions. यहाँ तक क्लियर है सबको? Now we'll be left with only a small topic, that is classification of an enzyme. Then we're left with the concept of activation energy, that curve. ठीक है, that is without enzyme the activation energy ज्यादा लगेगी, right? अगर enzyme act नहीं करेगा तो activation energy ज्यादा लगेगी, rather than जब enzyme act करेगा तो activation energy कम लगेगी, right? We have this one second. We have this we have this curve, no? Where that इसमें and इसमें we have without enzyme and with enzyme, right? Activation energy. So basically मेरे को तुमको ये कर्व अच्छे से समझाना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? एंड नॉमेनक्लेचर थोड़ा बचा है, I will complete on Sunday after the doubts. Okay? मैम कोफैक्टर के देयर आर नंबर ऑफ, उसके आगे क्या लिखा है? There are number of cases in which non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme, मतलब they are binded with the enzyme to make the enzyme catalytically active. ठीक है? Okay? So basically, your ओके मैम. yes. So only few part has been left with till now. That will be all covered after the doubt. Thoda because I'll take the lecture of 2.5. Okay? Clear? Shall we finish the lecture today? Yes मैम. Okay. You like it, Himanjani, the lecture? Any doubt? Any query? Okay, so see you in the next class, that is on Sunday. Bye bye. Have a good day. बाय मैम. Bye. बाय मैम. थैंक यू मैम. Bye bye. Miss me. Bye bye. Thank you मैम. Miss you too, बच्चे. Bye bye. You are now muted.